Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 1, that is integers. Now class, let's start the chapter. We can see a lot of examples in which we need integers such as when we deposit money in a bank. जब हम किसी बैंक में अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं, it is denoted by a positive integer. हमने क्या किया, उसको डिपॉजिट किया है, तो वो किससे डिनोट करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर से. Such as deposit of rupees 2000 is denoted as positive 2000 rupees या फिर plus 2000 rupees. And when we withdraw money from the bank, it is denoted by negative integer. So withdraw of 2000 is denoted as minus 2000. Understand class? Now rise in temperature above 0 degree is denoted by positive. बढ़ना above means बढ़ना तो क्या होगा? पॉजिटिव से. एंड फॉल घटना, नीचे होना इन टेम्परेचर बिलो 0 is denoted by negative integer. For example, in Srinagar, temperature was 4 degrees Celsius on Tuesday morning, but it decreased by 6 degrees Celsius in the night and measured minus 2 degrees Celsius. Okay class, now come on see. Point, profit is denoted by a positive integer. Profit is denoted by a positive integer and loss is denoted by a negative integer. Profit of 500 rupees, that is plus 500 rupees, and loss of 500 rupees is equal to minus 500 rupees. Now, at a sea level, the height is considered 0, but above sea level, it is denoted by positive integer, and below sea level, above means बढ़ना, below means घटना, denoted by negative integer. For example, height of Mount Everest is 8,848 meter above sea level. Above sea level, and depth of a submarine 800 meter below sea level is minus 800 meter. Understand class? Come on, introduction to integers. Now, introduction to integers. We know that whole numbers along with negative natural numbers from a bigger class of numbers called integers. We know that whole numbers along with negative natural numbers from a bigger class. Negative natural numbers from a bigger class of numbers, क्या कहते हैं हम उनको? Integers. So the numbers minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 and so on are integers. Integers can be represented on the number line as shown below. हम उनको number line पे मतलब show कर सकते हैं. Now on the number line, the value of integers increase as we move to the right on the number line and decreases as we move to the left on the number line. क्लास वो इंक्रीज होगा जब हम राइट में जाएंगे और वो डिक्रीज हो जाएगा जब हम उसमें लेफ्ट में जाएंगे. अंडरस्टैंड? सो वी कंक्लूड द फॉलोइंग रिजल्ट्स. कम ऑन. ए, all the negative numbers are less than 0 and 0 is less than all positive numbers. Now all negative numbers are less than positive numbers. We know that 4 is greater than 3, but minus 4 is less than minus 3 because minus 4 lies to the left of minus 3 on the number line. 0 is neither negative or not positive. ना तो 0 negative है ना ही class वो positive है. Understand? Absolute value of integers. Now come on, absolute value क्या होती है class? The distance of any number from 0 is called its absolute value. The distance of any number from 0 से लेकर जो उसकी value होती है वो क्या होती है? Absolute value. So minus 3 and 3 both have same absolute value equals to 3 as they are equidistant from 0. Okay class? Absolute value of an integer a is denoted as like this. तो class उसमें क्या होता है? माइनस हम खत्म कर देते हैं, माइनस हमारा हट जाता है. So we conclude that absolute value of an integer is its numerical value irrespective of its sign. Understand? The letter Z is the symbol used to represent integers. Now addition of integers guys. Rules for addition of integers with using number line. Now if we want to find 3 plus 4 on the number line, then we first go to the 3 and then move 4 steps toward right of 3. If we want to find 3 plus 4, class अब हम क्या करेंगे? 3 plus 4 को हमें नंबर लाइन पे देखना है, तो हम क्या करेंगे? Then we first go to 3. सबसे पहले हम क्या जाएंगे? 3 यहाँ पर and then move 4 steps. 1, 2, 3, 4 steps. उसके बाद
towards right of the 3. Now we reach at 7. So 3 plus 4 is equal to 7. For example, minus 3 plus minus 4. We go to first on minus 3 and then we move 4 steps to the left of the minus 3. The next addend is minus 4. So 1, 2, 3, 4, that is minus 7. Understand, class? Now minus 3 plus 4, we first go minus 3. Then we move 4 steps to right because क्या है ये positive है, understand? Plus ये 4 क्या है positive है. So right side of minus 3 because the addend is positive 4. We reach at plus 1, thus minus 3 plus minus 3 plus 4 is equal to plus 1. Understand? Similarly class, अब हम इनको प्लस करेंगे. सबसे पहले हम कर देंगे plus 3 पे and then move the steps. Understand? We go to the step cut. We first go to 3 and then we move 4 steps. 1, 2, 3, 4. To the left sides of plus 3 because addend is negative. We reach to minus 1, thus plus 3 plus minus 4 is equal to minus 1. Now class, rules for addition of integers without using number line. Yes class, to add two integers having same sign. जब हमारे पास हमें two integers को क्या करना है, add करना है, having same sign. उनके साइन या तो माइनस ही है या फिर उनके साइन प्लस ही है. Understand class? We add their absolute value or numerical value and assign the sign common to them. जो साइन उनमें कॉमन होगा हम वही साइन लगा देंगे क्लास. तो यू कैन सी है माइनस 3 प्लस माइनस 5. तो क्लास हमने क्या किया, उनको पहले ऐड किया, देन हमने उनको कॉमन साइन को. Understand class? Now for example you can see here minus minus, so minus minus plus, it is 25. You can see here. Understand? Now to add two integers having different opposite signs, जब हमारे पास टू ऐड करना है हमें opposite sign हो जिनके, ठीक है, integers को, we find that difference irrespective of their signs and then assign the sign of integers having greater numerical value. जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्लास हम वही साइन यूज करेंगे. Adding minus 3 plus 15, difference of 15 and 3 is 12. 15 has greater numerical value, so plus 12. Understand? You can see here plus 4 minus 15, so it is 11 but negative because 15 is greater than 4. Understand? For example, 4 minus 16, that is 12. Now you can see here plus 30 because 25 is greater than 12. Understand? Now subtraction of integers. Subtraction is the inverse process of addition. Plus inverse होता है उसका, उल्टा होता है. Therefore subtraction can be explained in items of addition. In items of addition, for example, 9 minus 5 is equal to 4 is same as 9 is equal to 4 plus 5, or what should be added to 4 to get 9. Understand class? Now rules for subtraction of integers. If 1 and b are two integers, 1 and b are two integers, to subtract b from a, change the sign of b and add it into a. Add it to a. Class ठीक है? Now a minus b is equal to a plus minus b. So 4 minus 3. Now 4 plus minus minus, that is 1. Now you can see here. Answer is 5. यहाँ पर क्या था 1 and यहाँ पर minus 5 minus 4. Minus 5 or plus 4, that is minus 9. Here is 5. Understand? Come on, exercise 1.1, question number 1. Arrange the following integers in ascending order. Ascending order means smallest to largest. So class, smallest to largest, smallest one is 9. Now 7, 5. Now class 0, 5 and then 12. Understand class? Rest of the parts do yourself. Come on, question number 2. Write all the integers lying between minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3. Rest of the parts do yourself. Come on, question number 3. Replace this by the sign or
so that the statement is true. हमें क्लास इन साइंस का यूज करना है. -5 -3 plus -3 is greater than -5. Now 4 is greater than 0. Rest of the parts do yourself. Come on, question number 4. Circle the greater integer and write its successor. Greater is 15, that is 16. Now 7 is 8. Of the parts do yourself. Come on, question number 5. Circle the smaller integer and write its predecessor. Now class, smaller one is 7, that is class -8. Now smaller one is -5, that is 6. Now rest of the parts do yourself. Come on, question number 6. Write three integers just succeeding -4. Succeeding -4, that is -5, -6 and -7. Now class, question number 7. Write two integers just succeeding -7, that is -6. Understand class? Question number 8. Write the absolute value of 4, that is -4 की क्या होगी class? 4, 0 की 0. Understand class? That is -0. Yes class. B part, absolute value of 0, that is 0. Rest of the parts do yourself. Come on, question number 9. Add the following integers using number line. Class, you can see here, draw a number line. 0, -1, -3, -4, 5, -6. Yes class. Now 1, 2, 3, 4, 5 and 7. Now question is -2 and 4. क्लास हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है. तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, -2. अंडरस्टैंड क्लास? -2 से हम राइट जाएंगे. 4 स्टेप्स. अंडरस्टैंड क्लास? क्या करना है, हम उसमें 4 ऐड करना है. सो 1, 2, 3, 4, दैट इज 2. So it is +2. Understand class? I hope you all have understood very well. Now class, next question is +2 and -4. Now come on, +2. Now -4. 1, 2, 3, 4. That is -2. So A part cut. Now B part is -2. Understand class? Now class, rest of the questions do yourself. Come on, question number 10. Add the following integers without using number line. Now class, that is 23 plus 56. Now class, it is 29. Now 23 and 50. Now class, 50. Now class, it is 27 because 50 is greater than 23. Understand class? Rest of the parts do yourself. Come on, question number 11. In 3 rounds of a quiz, Tina scored -10, 5 and 25. Find her final score. क्लास यहाँ पर 10 है माइनस और ये पॉजिटिव है. तो क्लास 25 plus 5, 30 minus 10, that is 20. Final score is for 20. In class, come on, question number 12. Add the following: -4 plus 3 plus -5. So class, you can see here, question number 12, -4 plus 3, now -4, minus. Now class, -9, -9 plus 3 is 6 class. Minus. In class, now see the part. 5 plus 2 plus -5. You can see here. Now 5 plus -2 plus -5 class. Now 5 minus 7, that is -2. In class, this is answer. Now class, A and B part is done. Rest of the parts do yourself. Come on, question number 13. Subtract -7 from -8. That is class
Understand class? Minus 15, 4 from minus 15. So class, 4 from minus 15. So class, it will become minus 19. Understand class? Rest of the parts, do yourself. Come on, question number 14, simplify. Yes class, question number 14, see the A part. Minus 50 plus 20 minus 30 plus 40. ओके क्लास, हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. तो क्लास माइनस माइनस वाले जो डिजिट्स हैं उनको एक साथ रखेंगे और प्लस वाले को एक साथ, तो हमारे लिए इजी होगा कैलकुलेशन. नाउ इट विल बिकम माइनस 80, इट विल बिकम प्लस 60. क्लास आंसर इज माइनस 20 because 80 and 60. Now class, see the B part. Minus 5 plus 5 plus 2 minus 5. Now class, minus 5 minus 5 minus 5 plus 7 plus 2. Okay class. Now class, 5 minus minus plus, so it is minus 10 plus 7 plus 2 9. Now class, it will become 15. Now minus 15 9, that is, yes class, minus 6. Understand class? 15 minus 9, that is 6. Now class, A and B part is done. Rest of the parts do yourself. Come on. Question number 15. A cloud is at height of 4,000 meter above the sea level. Above means upar. At a particular point, it is exactly above submarine which is floating 2,400 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? So class, we will add them. So class, it is, now class, we will add them 4,000 plus 2,400, that is 6,400. Understand class? 6,400 meter. Now properties of addition of integers. Now class, question number 1, property 1, closure property. For two integers a and b, a plus b will also be an integer. You can see here, minus 3 plus 2 is equal to minus 1, 2 minus 5 is equal to minus 3. Here the sum of two integers minus 3 and 2 is minus 1, which is again an integer. Similarly, when 2 and minus 5 are added together, again the result is an integer, that is 3. Now question number 2, commutative property for any two integers a and b, a plus b, b plus a. So class, minus 3 minus 5 minus 8 minus 5 minus 3 minus, यहाँ पर क्या होगा क्लास, ये दोनों इक्वल है, मीन्स दे बोथ आर इक्वल. So addition of integer is commutative. Okay. Now property 3, associative property for three integers a, b and c, a plus b plus c. So class, again हमारा क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर सेम होता है. You can see here. Hence addition of integers is associative. Property number 4, additive identity. Now class, for any integer a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. So we can say that 0 is the additive identity of integer and whole number. You can see here, minus 5 plus 0, that is, हमारा जो ये डिजिट होते हैं वही हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा. Now properties of subtraction of integers. Closure property, if a and b are two integers, then a minus b is also an integer, that is, you can see here. Now commutative property for any two integers a and b, minus a minus b is not equal to b minus a. Understand class? यहाँ पर देखिए आप, a हमारे पास 4 और b हमारे पास minus 5. So here is 9 और here is minus 9. So they both are not equal. So we conclude that subtraction of integer is not commutative. Question number 3, associative property for any three integers a, b, c plus, again हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा से अलग होगा. So we conclude that subtraction of integers is not associative. Now class, solve examples. Example number 1, write down a pair of integers whose sum is minus 7, difference is minus 10 or sum is 0. That a minus 12 is equal to 5, b is equal to 5. So class, you can see here minus 7.
डिफरेंस क्या होना चाहिए -10. सो क्लास 70 इज इक्वल टू -10. तो हमने क्या किया माइनस माइनस प्लस -17 + 7 इज इक्वल टू 10. नाउ लेट a इज इक्वल टू -9 b 9 in 0 fill out. In such questions other answer are also possible. क्लास आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर 12 और 5 लिया है तो आप 12 और 5 ही लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं. अंडरस्टैंड क्लास? आप यहाँ पर -9 और +2 भी ले सकते थे, तो आपका आंसर -7 ही आता. अंडरस्टैंड क्लास? Example number 2. In a quiz, team A scored -40, 10 and 0. Team B scored 10, -40, 0 and team C is. Which team scored better? What conclusion do you draw? क्या हम पहले स्कोर टीम ए का निकालेंगे, फिर टीम बी, टीम सी. ऑल थ्री टीम स्कोर्ड सेम, सभी ने सेम स्कोर किया है. So class, we conclude that integers can be added in any order. That is, addition of integers is associative. Understand class? Come on exercise 1.2. Question number 1. Write down a pair of integers whose sum is -5. class उनका sum क्या होना चाहिए? -5. तो yes class, -9 + 4. हमने क्या किया? उनका sum किया है. So it is -5. Yes class, difference is -5. So -7 minus -2 plus -7 + 2 is equal to 5. That is -5. Of the parts to yourself. Come on, question number 2. Write down various answers are possible. A pair of integers whose sum is -8. Sum class is -4. हमें क्या करना है? सम, जिनका सम क्या हो? 4 हो, का सम हो -8. हमें उनको क्या करना है? ऐड करना है क्लास. तो पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव ही हो वो दोनों, तो क्लास -4 एंड -4. क्लास अब हम इन दोनों का सम करेंगे. दैट इज -4. -4 is equal to -8. Understand? Now a integer, a negative integer and a positive integer whose sum is, तो क्लास सम निकालना है, दैट इज -3 होना चाहिए उनका सम. तो क्लास यू कैन सी हियर -4 + 1. So class it is -3. Rest of the parts to yourself. Come on, question number 3. In a quiz, team A scored 45, -50, 75 in 3 successive rounds, whereas team B scored this. Which team scored more and how much? कितना ज्यादा किया है, किसने ज्यादा किया और कितना किया है क्लास. Now question number 3. Yes class. Now question number 3. Team A scored, that is class 45, -50 and 75 class. So class 45 plus 75 minus 50. So class 0, 12, 120 minus 50. That is class 70. तो क्या हुआ हमारा टीम ए का. नाउ टीम बी, that is class -45 plus 50 plus 25. Now class -45 plus 70. Now class 70 minus 45, that is -4, 25. Now class it is 25. तो क्लास अब किसके पास ज्यादा है? टीम ए ने स्कोर किया है ज्यादा. हाउ मच? दैट इज 45. 45 से ज्यादा उसने स्कोर किया है. अंडरस्टैंड क्लास? यस क्लास. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स टू make the following statements true. Also name the property used. Plus -4 plus -5, that is minus. Understand class? Now 0. Understand class? Rest of the parts do yourself. Come on question number 5.
Verify A minus B is equal to A plus B for the following values A and B. Now class हमें verify करना है, that is A minus B is equal to A plus B. तो क्लास A क्या है हमारा, यहाँ पर A है हमारा 25 एंड B है हमारा 3. क्लास A 25 minus 3 plus 25 plus 3 is equal to 20. Now class 25 plus 3, 5 plus 3 is equal to 20. Plus both are equal. So yes, it is very. Understand class? Now see the next part, it is B. Now 50 minus 55. Now class B plus 75. Now class 50 plus 75, 50 plus 75. Now 5, 125, 120. Yes class, it is verified. Understand class? जब हमारे आंसर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या होगा, वो वेरीफाई होगा. Okay? Now A and B part is done. Rest of the parts do yourself. Come on. Number 6. Use the signs. Now class minus 4, minus 5. Now minus 5 or 10. Yes class. Here it will become minus 9. Okay. Minus 4 or minus 5, minus 9. Now 10 minus 5, that is 5. So it is bigger because it is positive. Now minus 25, 50. Now class 50, 50 plus, but they both are equal. Same class, rest of the parts do yourself. Come on, question number 7. The maximum temperature of a city on a particular day was 18 degrees Celsius, while the minimum temperature recorded on the same day was minus 3 degrees Celsius. What is the fall in temperature? So class 18 degrees Celsius minus 3, so that is minus 21 degrees Celsius. Understand class? Come on, question number 8. Sum of two integers is minus 30. If one of is 15, find the other integer is class 45. Minus 45. Now rest of the questions do yourself class. Now multiplication of integers. We know that multiplication is repeated addition. 3 multiplied by 2, 3 plus 3 is equal to 3. Now class 3 2s are 6, 3 3s are 3 plus 3 is equal to 6. वो भी माइनस की, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस. नाउ रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स विद ऑपोजिट साइंस, we multiply the number without sign and then put the negative signs to the product so obtain. Now 2 3s are 6, negative sign. 4 7s are 28, negative signs. तो multiply two numbers with same sign. अब क्लास हम सेम साइन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो we find the product of numbers without sign and then put the positive and then put positive sign to the product so obtain, that is plus 27 plus 8. Integers without any sign are considered positive integers. क्लास अगर हम कोई साइन नहीं लगाते तो हम उसको कंसीडर करते हैं पॉजिटिव साइन. Understand, to multiply a series of integers we count the numbers of negative integers. If it is odd, product will be negative. अगर odd है तो product क्या होगा, negative. Now see, you can see 1 2 3. तो odd है तो product क्या होगा, negative. As a number negative integer is odd. Now if even 1 2 3 4 even है तो क्या होगा, positive. Understand properties of multiplication of integers. Closure property. If a and b are two integers, then a multiplied with also an integer. This is called closure property of multiplication of integers. That is, let a minus 2 be 3. So minus 6 and integer. Now commutative property. If a and b are any two integers, then a multiplied by b is equal to b multiplied by a. This is called commutative property of multiplication of integers. You can see here. Now class, associative property. If a, b, c are any three integers, then a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c.
सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे. दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स. वी कैन मल्टीप्लाई थ्री इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. हम किसी भी ऑर्डर में क्लास उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यू कैन सी हियर. सो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम ही होगा. नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नाउ क्लास इफ a is any integer, then a multiplied by 1 is equal to 1 multiplied by a is equal to a. So 1 is called the multiplicative identity of integer, that is a is equal to -5 multiplied by 1 is equal to -5. Question number 5. Property of 0. Let a be an integer than. हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी जीरो से तो उसका प्रोडक्ट तो हमेशा क्या उसका जीरो ही होता है. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेट ए बी एंड सी बी एनी थ्री इंटीजर्स देन डिस्ट्रीब्यूट क्या क्लास a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय c प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. तो क्लास यू कैन सी है, अपने इसको फॉलो करेंगे. दैट इज both answers are equal. You can see here. Now class solve examples. सिंप्लीफाई बाय रीअरेंजिंग. अगेन क्लास हमने क्या किया, उसको रीअरेंज. अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, सेम ही होगा. तो मैं उसको ऑर्डर को चेंज भी कर सकती हूँ, तब भी मेरा आंसर क्या होगा, सेम ही होगा. नाउ एग्जांपल नंबर 2. सिंप्लीफाई यूजिंग प्रॉपर्टीज. नाउ क्लास प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स इज पॉजिटिव, दैट इज 250. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ कैन सी हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. 500 multiplied by 7 multiplied by 5, 500 multiplied by 35, 1700, cut 17,500. Come on, example number 4. Verify करना है. LHS, you can see here that is minus 4,000. RHS, now class this is also minus 4,000. So they both are equal. LHS is equal to RHS. Come on, exercise 1.3. Question number 1. The product. Now class इसको multiply करेंगे हम. 3 multiply by 16, that is now class 240 but साइन क्या होगा, नेगेटिव. अंडरस्टैंड क्लास. अगेन 32 multiply by 21, now class 672 but साइन क्या होगा क्लास, नेगेटिव. सेम क्लास रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. चेक इफ. क्लास देखो यहाँ पर भी 24, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, माइनस माइनस, तो यस इट इज इक्वल. अंडरस्टैंड क्लास. 7 मल्टीप्लाई बाय 5. हम उनको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बट हम उनके साइंस को देखेंगे. जहां पर माइनस है वहां माइनस है, यस इज इक्वल. अंडरस्टैंड क्लास. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू योरसेल्फ. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द टेबल गिवन. -3 -2 प्लस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स इज प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज 6. नाउ 9 -15. Understand. Now -1 -2, that is 2. 3 -5 -2. Same class. Rest of the parts do yourself. Question number 4. Why -9 multiplied by -5 multiplied by -6 is negative, while -9 multiplied by -5 multiplied by -9 minus multiply -1 is positive. Plus यहाँ पर जो नंबर ऑफ नेगेटिव है क्लास 1 2 3, साइन जो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है वो क्या है, ऑड है. 1 2 3, सो इसलिए वो क्या है, नेगेटिव है क्लास. अंडरस्टैंड क्लास. यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस क्या है, इवन है. तो क्लास यहाँ पर क्या होगा, इवन है, इवन, तो इसलिए हमारा ये क्या है, पॉजिटिव है क्लास. अंडरस्टैंड क्लास. यस क्लास. Come on, question number 5. Find the sign of product if we multiply together. Class 8 positive and 5 negative integers. Yes class, 8 positive and 5 negative integers का क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव ही होगा क्लास. Now 5 positive and 6 negative, that is class also negative. Now 7 negative and 4 positive, सभी क्लास क्या होगा, नेगेटिव ही होगा. Same class. Now come on question number 6. Which one is greater? Plus यहाँ पर -4 -2 एंड -1 है. यहाँ पर जो 1 2 3 साइन क्या है, नेगेटिव साइन का जो
ऑड है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है वो क्या है, ऑड है, और यहाँ पर माइनस क्या है, इवन है। 4 2 जार 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्लास यहाँ पर क्या होगा, दिस वन इज बिगर। नाउ -2 multiply by 5 multiply by -7. Now class 8 5s are 40. So class it is 40 again even. Now 5 2s are 10 and 7. So class it is 70. So this is greater. Rest of the parts do yourself. Come on, question number 7. Fill in the blanks and name the property used. Class यहाँ पर भी 3 and यहाँ पर भी. So class यहाँ पर -1. Now -4 multiply by 1. Class here will come. Understand class, rest of the parts do yourself. Come on, question number 8. Find the product using suitable rearrangement. Now class 8 9s are 18 9s are 162. So class 1620 is the answer. Now class 5 2s are 10 means 100 multiplied by 7, that is 700. Rest of the parts do yourself. Come on, question number 9. Verify the following. Now class verify करना है यहाँ पर 10. Yes, positive, positive. Now class question number 9. 10 multiply 8 minus 3 multiply plus ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड. नाउ दिस इज राइट हैंड साइड. 10 multiply 8 plus 10 multiply -3. सेम क्लास पहले हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे. क्लास 10 multiply by 8 plus 3. तो क्लास पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के थ्रू देख सकते हैं आप. पहले हम क्या करते हैं क्लास, मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम ऐड करते हैं. 10 multiply by 11 that is 110 and 10 multiply by 3 that is 30. Now class that is 80 plus 30 110 plus 110 is equal to 110 क्योंकि LHS is equal to RHS. Understand class? Now class rest of the questions do yourself. Come on, question number 10. Question number 10 class. Question number 10, 36 multiply by -56 plus -56. Now multiply by -46. Now class 36 multiply by -56 plus -56. Multiply by -40. Understand class? Yes class. अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्लास 36 multiply by 56 these are 18 in 2021. Now class 5 3s are 15. Now 1. Now class 2016 will be minus. Now class plus. Now 56 multiply by 46 6 3 5s are 30 plus 3 3 4 2 22 5 7 6 okay? 7 6 class. Now class difference 2016 then minus 1 that is 6 506. Understand class? मैंने क्या किया, पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन किया, देन माइनस प्लस माइनस, तो मैंने उसको क्या किया, माइनस किया. अंडरस्टैंड क्लास? यस क्लास. नाउ सी द बी पार्ट. 8 multiply by 48 multiply by 125. नाउ क्लास पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 48 की 8 से. 8 4 32 32 plus 6
that is 38. Now class 125 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 384 से, तो 2 4 to the 8 plus 2 10 0 1 now 5 now 4 now 2 now 10 3 5 are 15 5 1 3 0 6 plus 1 7 3 1s are 3 class. Yes class 0 0 0 8 now 4 48,000 OB class minus. Understand class? I hope you all have understood very well. Understand? Now A and B part is done. Rest of the parts do yourself class. Now come on question number 11. A cooling machine class, एक cooling machine requires the room temperature कितना होना चाहिए? To be lower 50 degree Celsius से कम होना चाहिए at the rate of 5 degree Celsius every hour. Understand class? What will be the room temperature after 8 hours process begins? Now class हमें 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे चाहिए at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 8 5 are 40 डिग्री सेल्सियस. Now understand class? Rest of the questions do yourself. Come on, division of integers. Division is an inverse operation of multiplication. This statement can be explained by taking few examples. Now क्या करते हैं क्लास? इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? डिवीजन इनवर्स होता है मल्टीप्लीकेशन का. सो क्लास 4 8 जा 32. नाउ हम 32 डिवाइड करेंगे 4 से, दैट इज 8. अंडरस्टैंड क्लास? या फिर हम 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, दैट इज 4. so for every division statement we can write two multiplication statements. Rules for division of integers: if both dividend and divisor plus dividend और divisor दोनों ही same sign के हो, then on dividing quotient will be a positive integer. If both dividend and divisor are the different sign, then on dividing the quotient will always be a quotient क्या होगा? Negative होगा. You can see here क्या है? Negative है. Now properties of division of integers. Closure property: if a and b are integers, then a divided by b may not be an integer. You can see here 5/2 is not an integer. Thus we can say that integers are not closed under division. Question number 2, commutative property: if a and b are the two integers, then a divided by b is not equal to b divided by a. Let us consider the following case. You can see here 2, but यहाँ पर क्या है 1/2. So not equal. Now division by 0 is, as in whole numbers division by 0 is meaningless. क्या उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. Similar is the case with integers. Let a is an integer, then a divided by 0 is not defined, meaningless. What about 0 divided by a? 4 is not equal. Division by 1, तो क्लास हम क्या करते हैं जब डिवाइड करते हैं? व्हाट अबाउट डिवीजन बाय -1? तो क्लास हमारा जो डिविडेंड होता है वही हमारा क्वेश्चन हो जाता है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन फॉर एनी थ्री इंटीजर्स, as you can see here, a divided by b divided by c. तो क्लास ये नहीं होगा इक्वल. लेट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. as you can see here 2 इधर क्या था 32. hence we conclude that division of integers is not associative. Solve examples. Evaluate the following. Now class you can see here, यहाँ पर हमने उसको सोल्व किया. सो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ -2, और यहाँ पर हमने उसको सोल्व किया -1, then equal to 5. Now class come on exercise 1.5. Question number 1, evaluate. Now 40 divided by 5 is equal to 5 8s are 40 -8. Now class 450 divided by 9 because plus 6 9. तो क्लास यहाँ पर हम उसको डिवाइड कर देंगे बिकॉज 9 5s are 45 0, so it is -50. Of the parts do yourself. Come on question number 2, verify that a divided by b is equal to is not equal b divided by a for the following value a and b. Now class वेरीफाई करना है हमें a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल b डिवाइडेड बाय a. को क्लास a हमारा है -15,
b हमारा है 3, तो क्लास हमने उसको डिवाइड किया, 3 5 का -5। अब हमें देखना है कि यह इक्वल है, b को हम डिवाइड करेंगे -15 से, तो क्लास ये क्या होगा 1/5। अंडरस्टैंड क्लास? So class, they both are not equal. Understand? Rest of the questions, do yourself. Come on, question number 3. Verify that a divided by b plus c is not equal. A divided by b plus a plus c for each of the following. Yes, class. Come on, question number 3. A is equal to 48. B 4 is equal to -2. Class, you can see here. हमें क्या verify करना है? A divided by b plus c not equal. A divided by b plus a divided by b. Understand class? So a हमारे पास 48 है, b हमारे पास है 4 -2, 48 divided by 2 that is 24. Now class, a हमारे पास 48 है divided by b that is 4. Now a divided by c. Now class, here is c. A हमारे पास again 48 है divided by c that is -2. Now class, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर क्या होगा क्लास 12. नाउ क्लास, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या होगा -24, बिकॉज 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. नाउ क्लास, हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 24 मल्टीप्लाई बाय 12. यू कैन सी हियर 288. क्लास 288 वो भी माइनस, they both are not equal. Understand class? I hope you all have understood very well. Now class, rest of the part do yourself. Come on, question number 4. Write 3 pairs of integers a, b such that a divided by b is equal to 4. Different answers are possible. Write 3 pairs of integers. हमें 3 pairs लिखना है क्लास, a, b such that a divided by b is equal to 4. वो भी माइनस के. नाउ क्लास, हम 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, दैट इज -4. -8 को डिवाइड करेंगे 2 से, दैट इज -4. नाउ क्लास, -12 को डिवाइड करेंगे 3 से, दैट इज माइनस. क्या लिखना है? 3 इंटीजर्स लिखने थे. ओके क्लास, मैंने 3 इंटीजर्स लिखे जिनका आंसर क्या है? क्वेश्चन -4. और यही हमसे उसने क्वेश्चन में बोला था. यू कैन सी हियर different answers are possible. Now question number 5. An elevator is 25 meter below the ground level and it ascends at the rate of 5 meter per minute. Find the time taken by to reach 50 meter above the ground. प्लस 25 मीटर क्या है? एलिवेटर है, किसके? ग्राउंड लेवल के. और ascend at the rate of 5 meter per minute. Find the time taken by it to reach 5 meter above the ground. Now class, see here. Yes class. Now an elevator is 25 meter below the ground level. वो नीचे है class. And it ascend at the rate of 5 meter per minute. Find the time taken by to reach 50 meter above. 50 मीटर ऊपर जाना है above the ground. Now class, you can see here. यहाँ पर 5 2 are 25, 2 are 50 और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 इज इक्वल टू 10 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स. टाइम कितना होगा टेकन बाय टू रीच 50 मीटर? दैट इज 10 मिनट्स क्लास. नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डू योरसेल्फ क्लास. योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. Prepare it very well and we will meet you in next class. Thank you.